Welcome to How to Become a Podcaster course. I am your coach, Pullo Begum. I am super duper excited and thrilled to see that you are so serious that you have finally bought a course and you're here to learn all about podcasting. Wow! यहाँ तक अगर आप पहुंचे हैं सो डेफिनेटली इट इज माय ड्यूटी मैंने अपने कंधों पे ये मिशन लिया है कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल हैव योर पॉडकास्ट शो एंड यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ एज अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर आने वाले 6-8 महीनों में आप एक एस्टैब्लिश्ड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर होंगे ही होंगे सो बिफोर दैट इस मिशन को पूरा करने के लिए इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप और मैं एक बॉन्ड बनाएं हमारे बीच में एक कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है सो आप मुझे जान पाएं और मैं आपको ना देखते हुए भी जान पाऊं कि कैसे आप इस जर्नी को क्रॉस करेंगे सो मैंने पहले से बहुत कुछ सोचा समझा और इसी हिसाब से ये कोर्स को क्यूरेट किया है आई होप कि ये बहुत ही सिंपल हो और आपको समझ में आए और आप इसको धीरे धीरे बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस के साथ फॉलो करेंगे तो पॉडकास्ट क्या आप बहुत कुछ करने लग जाएंगे इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटाइजेशन सो आर यू रेडी to take on this plunge, this challenge, this journey with me, your coach Pullo Begum. So, thank you. मुझे आपकी हाँ ही चाहिए थी. So, before we plunge to this journey, let's know about your trainer, about your coach. That आखिर who is this Pullo Begum? तो चलिए चलते हैं to know about your trainer. Hello, I am deeply honored that here you are to know all about me. So here's a brief introduction about Pullo Begum. Well, Pullo Begum works for child development, women empowerment, mental health, sustainable lifestyle, promotes handwork, and now I have transformed myself as a digital content creator, an actor, director, producer, consultant, and a coach. And I have curated more than 1,000 episodes of podcasts of mine, of my students. I have some 50 plus brand collaborations and done many lives and have been called upon as a speaker for NGOs for all the worthy causes I work on. Podcast shows which I've done are Kahani Pitara, School of Health, You Are What You Eat, One Life is Enough, Ideas You Should Know. And Pullo Begum, this avatar is now famous among children as Auntie Pullo Begum and her Kahani Pitara. I'm a trained voiceover artist and a theatre practitioner. And I've mentored more than 20 plus children and some 10 plus adults to be a podcaster, and they all are running their successful podcast shows. So, my multiple verticals are direction, wherein I do plays and engage in international theatre festivals, and I do some cross collaborations for my podcast shows. So, the complete direction and production we handle under the banner of Pullo Begum. I'm a speaker and influencer, an actor, and production. As I told you, we do a lot of talk shows and short films and music videos and lot many things. So, this is the interesting part. My turban avatar, ये कैसे आया? कहानी पिटारा जब मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही थी एज अ स्टोरी टेलर सो आई थॉट why not promote the legacy of heritage India and पहले जैसे ज़माने में स्टोरी टेलर्स गली गली घूमा करते थे उन्होंने एक पगड़ी बनाई होती थी उनके पास एक झोला होता था और वो बच्चों को प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाते थे सिमिलरली आई थॉट ओके फुल्लो बेगम will don a turban and और यही एक यूनिक बात निकल के आई इस कैरेक्टर की जो कि बच्चों को बहुत पसंद आई then I'm deeply inspired by those choti choti si tiny miny ants because
they carry that never say never attitude और वो इतनी ज़्यादा organized होती हैं कि मुझे देख के इतना wonderment हुआ. And from there I got my digital mascot, the चिटंकी. जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. She also wears specs because I also wear spectacles, and this board denotes that yes, she's a female and she carries that quirkiness just like me, Pullo Begum. So her name is चिटंकी बिकॉज सब मुझे छटंकी छटंकी बुलाते थे. तो मैंने कहा ओके, सो माई डिजिटल मैस्कॉट इज चिटंकी, विच आई एम रियली प्राउड अबाउट. So this is all about your coach Pullo Begum, and see you now in the course on how to become a podcaster. Are you ready and game? Let's take this journey ahead. See you there.